गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवः महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणाम गुरुदेव भगवान शिव शंकर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु श्री गणपति। जय भगवान कामेश्वर की जय। जय भगवान कामेश्वर की जय। जय भगवान कामेश्वर महादेव की जय। प्रणाम भगवान कामेश्वर। जय भगवान मार्तंड भैरव की जय। जय भगवान मार्तंड भैरव की जय। जय भगवान मार्तंड भैरव की जय। प्रणाम भगवान मार्तंड भैरव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भगवान भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समभ्निता रागस्वरूप पाषाढ़्या क्रोधकारंकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुको दंडा पंचतन्मात्र सायका निजारूण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला चंपकाशुक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत्कोटिरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिषेका वदन स्मर मंगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मिनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्ब मंजरी क्लुप्त कर्णापूर मनोहरा ताटंक युगलीभूत तपनोडुपमंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभू नवविद्रुम बिंबस्त्री न्यक्कारी दशनच्छदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्युज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटिकामोद समाकर्षि दिगंतरा नीच संलाप माधुर्य विनिर्भर्षित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामे समानसा अनाकलित सदृश्य चिबुक श्री विराजिता कामे शबद मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा कामेश्वर प्रेम रत्न सरी कनकांकदकेयूर कमनीय भुजान्विता रत्नर्गेवय चिंताक लोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपणस्तनी नभ्याळ बाळ रोमाळी लता फल कुचद्वयी लक्ष्य रोमलताधार तासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन् मध्य पटबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटितटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रसनादामभूषिता कामेश ज्ञानसौभाग्य मार्दवरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्मरतृणा भजघ्निका गूढ़गुल्फा कुर्मपृष्ठ जयष्णु प्रपदान्विता। प्रणाम माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। जय मां। सो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। 4:36 हो गया। ओके, कोई बात नहीं। जो आधा सारा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर से दोबारा से शुरुआत करेंगे। थोड़ा पीछे से शुरुआत करेंगे ताकि सब चीज़ अच्छा हो जाए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम।
The aforementioned example of a homeostatic control mechanism are only a few of many thousand in the body, all of which have a certain characteristic in common as explained in this section. देखो कई बार बुक को पढ़ेंगे, ये सिर्फ बुक के साथ एक ट्यूनिंग विकसित करना है, ठीक है। ये नॉर्मल रीडिंग पैटर्न चल रहा है, ऐसा नहीं नॉर्मल रीडिंग पैटर्न से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक। मोस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी एक्ट बाय नेगेटिव फीडबैक which can be best explained by reviewing some of the homeostatic control system mentioned previously. This is because the purpose of negative feedback is to ensure homeostasis in the regulation of carbon dioxide concentration. A high concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid increases pulmonary ventilation. This in turn decreases extracellular fluid carbon dioxide concentration because the lungs expire greater amount of carbon dioxide from the body. In other words, the high concentration of carbon dioxide initiate event that decreases the concentration towards the normal, which is negative to the initiating stimulus. Conversely, a carbon dioxide concentration that falls too low result in feedback to increase the concentration. This response is also negative to the initiating stimulus. In the arterial pressure regulating mechanism, a high pressure causes a series of reactions that promote lowered pressure. In arterial pressure regulating mechanism, a high pressure causes a series of reactions that promote a lowered pressure, or a lowered pressure causes a series of reactions that promote an elevated pressure. In both instances, these effects are negative with respect to the initiating stimulus. Therefore, in general, if some factor becomes excessive or deficient, a control system initiates negative feedback, which consists of a series of changes that return the factor towards certain mean value, thus maintaining homeostasis. तो जो पढ़ करके समझ में आया, होम्योस्टेसिस सिर्फ ये नहीं कि एक मान लीजिए बॉडी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं, पोटासियम हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो जब कोई चीज़ बढ़ता है, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, ताकि वो एलिवेटेड जो होता है कोई भी चीज़, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, आपका ऑक्सीजन हो सकता है, आपका जो भी मतलब पोटासियम, सोडियम जो भी होगा, मतलब जो बढ़ेगा उसको अगर घटा दिया जाएगा तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये तो एक आम जानकारी है जो कि नेगेटिव फीडबैक के साथ सही बैठती है। लेकिन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएट होता है, उसके कारण से क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के लिए क्या करता है, बॉडी उस लेवल को आने के लिए फिर से उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तो अगर घट जाएगा तो उसे बढ़ाएगा भी नेगेटिव फीडबैक। एंड एक चीज़ समझ में आया कि पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल कहने का मतलब है नेगेटिव फीडबैक, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है, अगर दो ही मान करके चलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो उनमें से नेगेटिव फीडबैक सबसे ज़्यादा असरदार है, जो हमें पढ़ करके समझ में आया, ठीक। नाउ गेन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। The degree of effectiveness which control gain of a control system. Now control system का gain के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। So gain of a control system, the degree of effectiveness with which a control system maintains, the degree of effectiveness with which a control system maintain constant condition
is determined by the gain of a negative feedback. ठीक है, the degree of effectiveness with which a control system maintain constant condition is determined by the gain of a negative feedback. For instance, let us assume that a large volume of blood is transfused into a person whose baroreceptor pressure control system is not functioning. ठीक है, हमें किसी को ब्लड देना है. लेट्स अज्यूम दैट ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमें किसी को देना है इनटू ए पर्सन हुज बारो रिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग, जो कि फंक्शन नहीं करता है. ठीक है, एंड द आर्टेरियल प्रेशर राइजेस फ्रॉम द नॉर्मल लेवल of 100 mmHg up to 175 mmHg. Then let us assume that the same volume of blood then let us assume that the same volume of blood is injected into the same person भी same होगा when the baroreceptor system is functioning, and this time the pressure increases only 75 mg. ठीक है, प्रीवियसली उसका क्या था, and this time the pressure increases only 75 mg. Control system is not functioning and the arterial pressure rises from the normal level of activity. Okay, the pressure increases only 25 mg. Thus the feedback control system has caused a correction of minus 50 mmHg, that is from -50 mmHg. इसको अगर इसको फेरेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 175. ओके, 50 25 75. ठीक है, ओके. Thus feedback control system has caused a correction of a -50 mmHg, that is from 175 to 125 mmHg. There remains an increased pressure of 25 mg. ठीक है, there remains an increased pressure of plus 25 mmHg called the error, which means that the control system is not 100% effective in preventing changes. The gain of a system is then calculated by using the following formula. So gain is equal to correction by error. Thus in baroreceptor system example, the correction is minus 50 mg and the error persisting is plus 25 mg. Therefore the gain of the person baroreceptor system for control of arterial pressure is minus 50 divided by plus 25 is equal to minus 2. That is a disturbance that increases or decreases the arterial pressure does so only 1/3 as much as would occur if the control system were not present. The gain of some other physiological control system
are much greater than that of the baroreceptor system. For instance, the gain of the system controlling internal body temperature when a person is exposed to moderately cold weather is about minus 33. Therefore, one can see that the temperature control system is much more effective than the baroreceptor pressure control system. Therefore, one can see that the temperature control system is much more effective than the baroreceptor pressure control system. Now, positive feedback. Positive feedback can sometimes causes vicious cycle and death. Why do most control system of the body operate by negative feedback rather than positive feedback? If one consider the nature of a positive feedback, it is obvious that positive feedback leads to instability rather than stability, and in some cases can cause death. Figure 1.3 shows an example in which death can ensue from positive feedback. This figure depicts the pumping effectiveness of the heart, showing that the heart of a healthy human being pumps about 5 liters of blood per minute. If a person suddenly bleeds 2 liters, the amount of blood in the body is decreased to such a low level that not enough blood is available for the heart to pump effectively. As a result, the arterial pressure falls and flow of blood to the heart muscle. Uh, as a result, the arterial pressure falls and flow of blood to the heart muscle through the coronary vessel diminishes. This scenario results in weakening of the heart. Further diminished pumping, a further decrease in coronary blood flow, and still more weakness of the heart. The cycle repeats itself again and again until death occurs. Note that each cycle in the feedback results in further weakening of the heart. In other words, the initiating stimulus causes more the same, which is positive feedback. Positive feedback is better known as vicious cycle, but a mild degree of a positive feedback can be overcome by negative feedback control mechanism of the body, and the vicious cycle then fails to develop. For instance, if the person is in aforementioned example bleed only 1 liter instead of a 2 liter, the normal negative feedback mechanism for controlling cardiac output and arterial pressure can counterbalance the positive feedback and the person can recover, as shown by the dashes curve of figure 1.3. Okay. इधर क्या है? Pumping effectiveness of the heart, liters pump per minute. Okay. Recovery of heart pumping caused by negative feedback. After 1 liter of blood is removed from the circulation, death is caused by positive feedback when 2 liter of blood is removed. ठीक है, कैसे जानेंगे? ये होगा लीटर्स पम्प्ड पर मिनट, तो 5 लीटर, ये तो स्वाभाविक है, उसका मैक्सिमम पॉइंट 1 2 3 आवर। ठीक है, अगर 1 आवर के बीच में सारे चीज हो रहा है तो ब्लीड अगर 1 लीटर होगा, रिटर्न टू द नॉर्मल, मतलब ये ऐसे जा करके 5 लीटर कैसे भी करके कर देगा, रिटर्न टू द नॉर्मल। बट ब्लीड अगर 2 लीटर हो रहा है तो ये धीरे 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 कॉन्सिक्वेंसेस होगा, अल्टीमेटली डेथ होगा। ठीक है। Now, positive feedback in physiological setting. In some instances, the body uses positive feedback to its advantages. Blood clotting is an example of a valuable use of a positive feedback. When a blood vessel is ruptured and clot begins to form, multiple enzymes called clotting factor are activated within the clot.
Some of these enzymes act on other inactivated enzyme of the immediately adjacent blood, thus causing more blood clotting. This process continues until the hole in the vessel is plugged and bleeding no longer occurs. On occasion, this mechanism can get out of hand and cause formation of unwanted clot. In fact, this is what initiates most acute heart attack, which can be caused by a clot beginning on the inside surface of a atherosclerotic plaque in the coronary artery and then growing until the artery is blocked. Childbirth is another instance in which positive feedback is valuable. When uterine contraction becomes strong enough baby for the baby's head to begin pushing through the cervix, stretching of the cervix send signal through the uterine muscle back to the body of the uterus, causing even more powerful contraction. Thus, uterine contraction stretch the cervix, and the cervical stretch causes stronger contraction. When this process becomes powerful enough, the baby is born. If it is not powerful enough, the contraction usually die out and a few days pass before they begin again. Another important use of positive feedback for generation of a nerve signal, that is stimulation of a membrane of a nerve fiber, causes slight leakage of sodium ion through sodium channel in the nerve membrane to the fiber interior. The sodium ion entering the fiber then change the membrane potential, which in turn causes more opening of the channel. More opening of the channel, more change of potential, still more opening of the channel, and so forth. Thus, a slight leak becomes an explosion of sodium entering the interior of the nerve fiber, which creates nerve action potential. This action potential in turn causes electrical current to flow along both the outside and inside of the fiber and initiate additional action potential. This process continues again and again until the nerve signal goes all the way to end of the fiber. In each cases in which positive feedback is useful, the positive feedback is part of an overall negative feedback process. For example, in case of a blood clotting, the positive feedback clotting process is a negative feedback process for maintenance of a normal blood volume. Also, positive feedback that causes nerve signal allows the nerve to participate in thousands of negative feedback nervous control system. Now, example of a negative and a positive feedback. Negative feedback: regulation and homeostasis of a body temperature, pH of extracellular fluid, blood pressure, iron concentration, hormone level in the blood. Positive feedback: platelet aggregation, clotting of a blood, uterine contraction during childbirth, sodium entry during nerve depolarization, LH surge during ovulation, luteinizing hormone surge during ovulation, milk ejection reflexes. From the above example, it is clear that positive feedback serves two important purposes. It accelerates a physiological response. दूसरा, it amplifies a response. However, in order to ensure that positive feedback does not proceed into a vicious cycle which could be lethal, a break needs to be present which stop the process. From the example above, for instance, the stimulus of a uterine contraction during childbirth, that is, the stretch of the cervix, stops once birth has occurred. Example of a negative and positive feedback are provided in box 1.1. These examples are discussed in greater detail in later chapter. More complex type of a control system, adaptive control. Later in this text,
When we study the nervous system, we shall see that this system contains great number of interconnected control mechanisms. Some are simple feedback system similar to those already discussed. Many are not. For instance, some movement of the body occurs so rapidly that there is not enough time for nerve signal to travel from the peripheral part of the body all the way to the brain and then back to the periphery again to control the movement. Therefore, the brain uses a principle called as feed forward control to cause required muscle contraction, that is sensory nerve signal from the moving part apprise the brain whether the movement is performed correctly. If not, the brain corrects the feed forward signal that it sent to the muscle next time the movement is required. Then it still further correction is necessary. This process will be performed again for subsequent movement. This process is called as adaptive control. Adaptive control in a sense is a delayed negative feedback. Thus one can see how complex the feedback control system of the body can be. A person's life depends on all of them. Therefore a major share of this text is devoted to discussing this life-giving mechanism. Summary: automaticity of the body. The purpose of this chapter has been to point out first the overall organization of the body and second the means by which different part of the body operate in harmony. To summarize, the body is actually social order of about 100 trillion cells organized into different functional structure, some of which are called organ. Each functional structure contribute its share to the maintenance of a homeostatic condition in the extracellular fluid, which is called the internal environment. As long as normal conditions are maintained in this internal environment, the cell of the body contribute to life and function properly. Each cell benefit from the homeostasis and in turn each cell contribute its share towards the maintenance of homeostasis. This reciprocal interplay provides continuous automaticity of the body until one or more functional systems lose their ability to contribute their share of function. When this happens, all the cells of the body suffer. Extreme dysfunction lead to death. Moderate dysfunction lead to sickness. Now यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आ गए, नॉट अ क्वेश्चन टोटली। इसका आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आ सहित मु आज होमियोस्टासिस को मु पूरा फुल रे आज अपडेट दे दूची, माने पूरा फुल गोटे दिन रे मु लगभग सारी केते 2-3 थर बोधे पढ़ी की सारी सारी गोटे पेज 2टा पेज तापरे 3टा पेज कही परिबा, 3 माने 3 दूणे 6, तो 3टा पेज टोटल रहा, 3टा पेज पूरा कंप्लीट हो गला। आउ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे लिए खत्म हो गया। नाउ सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे द सेल एंड इट्स फंक्शन, ठीक है, जो कि आज स्टार्ट करूंगा, ये भी सारूंगा। हालांकि पहले चैप्टर और भी पढ़ेंगे, ये मिनिमम मतलब उतनी बार पढ़ेंगे जितनी बार ट्यूनिंग नहीं हो जाए। मैं पहले जो आपको ललिता सहस्त्रनाम बताया था ना ऐसे ही नहीं, मतलब बताया था, मतलब एक समय ऐसा था ललिता सहस्त्रनाम मैं बिल्कुल बोल नहीं पाता था, ये हाल था। अब उसे बिना देखे कुछ श्लोक में पढ़ पाता हूँ। पढ़ा था कैसे? ऐसे, इसीलिए आज पढ़ा। तो मैं चाहता हूँ स्वाभाविक तरीके से अपना गति जो भी हो, चाहे स्लो हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे फास्ट हो, जैसा भी हो, उस गति के साथ
कब हम अक्वेंटेड होंगे बुक के साथ। बुक रीडिंग करने का उद्देश्य यही है। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक जो आप कहते हो मोटिवेशन देने से मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन के पीछे क्या काम होता है, क्या मेहनत होता है और क्या लगन होता है, कितना डेडिकेशन होता है, कितना समय बैठना पड़ता है, ये सारे चीज़ जब इवालुएट होता है तब जा कर के उसे मोटिवेशन कहा जाता है। या तब जा कर के आप जो भी काम कर रहे हो, मान लीजिए बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो होता है। ठीक है, तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। स्टडी अप विथ मी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड जाते जाते बोलूँगा अब सेकंड चैप्टर भी पढ़ूंगा। सेकंड चैप्टर में जनरली कितने पेज हैं, अगर ज़्यादा पेज होगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा। 1 पेज, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पेज। थोड़ा अगर कंसिडर करेंगे 8 पेज टोटली है। 8 पेज टोटली है। ठीक है, टोटल अगर MCQ FMCQ ये अगर कवर हो जाएगा तो 8 पेज, 8 इंटू 2 मतलब 16। ठीक है, बोथ साइड अगर काउंट करोगे तो 16 हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे, हालांकि इस चैप्टर को मैंने कुछ भी पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है। आज कोशिश करूँगा जितना हो सके रैप अप मारेंगे। So cell and its function. Thanks for watching.